Hello everyone. Hello Bacho. Let's start with our session today. As we are in the series of understanding the geography of India, today's session is focused on four rivers of India, right? There are a lot of rivers in India, but we have identified four rivers to study and understand, how are those rivers flowing in India. Before that, I have a question for you. Why should we study rivers? What is the importance of rivers in our life? One by one, we can answer. In our civilization, right? We are calling rivers as mother. Correct? Yes. Yes or no? Yes, no. We call Ganga Yes. Ma, right? We call Narmada Yes. Ma. We call Kaveri Ma. Why do we call river a mother? What is Uh, the main function of a river? What is that? What is the main help that we get from our rivers? Water. We get water. We get Water. water, right? And that water is utilized for which all things? Drinking. Correct? Bathing. Washing. Plants also. Washing. Animals. Human beings also. Right. For plants, Washing for the washing the clothes. washing the clothes, correct? Bathing. For Bathing, cooking. For drinking, cooking. cooking, Animals. animals. That means farming also, right? For farming Birds. also you require water. Yes. So now you understand why are we calling rivers as our mother? Yes. Because it is giving us everything, right? When the baby is Yes. in the womb of a mother of 9 for 9 months, everything that the baby is getting is from whom? Mother. Mother, right? Mother. Everything. That baby is able to be alive for 9 months inside the womb of a mother because the mother is giving everything to the baby. Correct? So Yes. similarly, a river is giving us everything, right? For example, these clothes that I'm wearing. For making clothes, you require water. Yes? Mm, Yes. yeah. If you go to a clothing factory, water is required for making clothes. Okay? For washing clothes, you require water, Yes. right? For keeping myself clean, you require water. Yes. For drinking, you Taking require bath. water. For food, you require water. Taking yes. Bath. For taking bath, keeping yourself clean, keeping yourself healthy, right? If you don't take bath every day, you will fall sick, correct? Yes. For washing your hands, right? You require water. So what we are saying? River is giving us everything in our life, right? So similar to how a mother gives everything to a child, river gives us everything. That is why we are calling river as our mother. Correct? Yes. Everybody understands? Yes. Yeah. Now, why are we Yes. studying rivers? Now we understood the importance of river, right, in our life, right? Next time you go to a river, next time you see a river, you always have respect. Yes. When somebody is giving us so many things without we doing anything, do we do anything for the river? No. No. Still, the river is giving us everything, right? Just yes. Have to keep it clean. Correct. It is like a tree, right? We don't do much for the tree, but then the tree keeps giving us oxygen, keeps giving us flowers, fruits, shade, shadow, right? Everything tree is giving us, right? Yes. So similar to a tree, river is also extremely important, and it keeps giving us things that we need all the time, right? Now, from geography point of view, from understanding the geography of our country, we need to understand rivers, correct? Yes. Now you tell Yes. me, Jab, before the invention of wheel, right? Wheel was invented by humans, correct? Wheel, which we use in our cars and trucks and buses, right? Yes. So before the roads came, what was the first transport mechanism for us, for humans? Ships. Ships, and ships were going on river, Water. water, right? So the first road that we used was?
River. Correct, no? Water. Because the Yes. rivers are flowing. Once we put a ship in a river, the ship also flows along with the river. Yes or no? Yes. Correct? So the Yes. first road that human beings utilized was a river. Yes or no? Yes. Yes. Right? So that is also one big usage of rivers. है ना? Yes. Now Yes. the major cities. Now, for example, let's say you let's go back 10,000 years. Okay. Now you are identifying a place to make your house. Okay. Let's assume that we are going back 10,000 years and we are identifying a place where we want to make a house. Will you make a house where there is a river, or will you make a house where there is no river? No river. There is a river. There is a river, right? You need river to be near to your house, not like very near, but then you should be able to go to the river from your house, correct? Yes. Because then you want to do farming, you want to have water for drinking, right? Everything, right? So if you see Yes. all the big cities in India, they are on some or the other river. Yes. 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 So Yes. if you see all the big cities, can you tell me some cities where there are rivers that are flowing through the cities? Maharashtra. In Maharashtra, in Pune, which river is flowing through the city? Muramutha, right? Muramutha is a river in Pune, which is flowing through the city, right? Can you tell me the river Yes. which is flowing through Delhi? Uh, Yam. Ganga. Yamuna, right? Yamuna. Yamuna is the river Yes. flowing through the city of Delhi, right? What is the river Yes. beside Taj Mahal? Uh, Ga. Goda Krishna. Yamuna only. Okay. Now let's first understand this. Okay, all the big cities in the world. Okay, not even in India. All the big cities in the world have come near the rivers. Wherever the rivers are passing, the cities are along the river. You got this concept? Correct, no? Because the cities required water, and river is the main source of water for us, right? तो Yes. पूरे वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े सिटीज हुए ना, मोस्ट ऑफ देम आर अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर. बैंक्स ऑफ द रिवर समझते हो ना? बैंक ऑफ द रिवर, बैंक इज द Yes. side of the river, right? So Yes. most Yes. of the big cities in the world, they are along the banks of the river. Okay. And that is how the countries have grown, the states have grown, the cities have grown, the world has grown. Okay. You got this concept? Because river is giving you everything, everybody wants to stay near the river. That's why पूरे वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा सिटीज रिवर के आजू बाजू ही बने हैं. ओके. गॉट इट ना बच्चों? So that is Yes. why we want to study the rivers. Okay. Yes or no? Yes. Yes. Yeah. So we want to study the rivers. The first river that we are studying is Ganga. Okay. Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Narmada. These four rivers we are trying to study today. Now just Okay. imagine the length of Ganga. Ganga's length is approximately 2,525 kilometers. What is the distance between Mumbai and Pune? Can you check? 2000. 100 kilometers. Hmm? 200 kilometers. 150 kilometers. Okay. 150 kilometers is the distance between Mumbai and Pune. So, Double of that. what is the length of Ganga? 2,525, right? Yes. So if we do Yes. 2525 divided by 150, that is coming to 16.83, say almost 17, right? So it is the Yes. 17 times bigger length of Ganga between, if you compare between distance between Mumbai and Pune. So you can imagine how long it is.
Correct? बापरे. What is the approximate distance between Kanyakumari and Kashmir? Where is Kashmir? Top of India, right? Crown jewel of India, Yes. right? Yes. And Kanyakumari is where? At the most bottom place, right? Most Yes. southern place, right? Yes. What is the approximate distance between these two places? Anybody knows? 10,000. It is it is around 3,500 kilometers. How much? 3,500. 3,500. 3,500 kilometers. Okay. बापरे. So 3,500 kilometers is the length of our country. Correct, na? Yes. Yes. From Kanyakumari to Kashmir, if you are measuring, that is approximately 3,500. Ganga length is 2,500. So you can imagine how long Ganga is, है ना? हाँ. Yes. It's almost covering the half and the half. Almost covering the length of India, 70% of length of India. If you just go, but it is not along the length of India. The route is different, but we are just trying to understand the length. Correct? Yes. It is almost covering India. Yeah. Now, next river is Yamuna. Yamuna is much shorter. It is much lesser in length, 1,300. Then Brahmaputra is 2,900. Narmada is 1,300. So these are just the lengths, okay, of the top rivers that we are going to look at. Okay. Now see, river basin area support. Can anybody tell what is this concept? River basin area support. Can anybody think what it is? This is area. Okay. Can you see the unit? It is square kilometer. Square बापरे. kilometer. That means the it is area. Correct, na? Now read this. Yes. Larger basin area is equal to more farmland, more food, growth of civilization. ओ बापरे. देखो लार्ज बेसिन एरिया मतलब क्या है ना, जो नदी जा रही है ना, उसके आजू बाजू Yes. का कितने एरिया में वो पानी दे रही है, समझ रहे हो? जब नदी फ्लो हो रही है तो इट इज गिविंग वाटर टू द एरियाज विच आर बिसाइड द रिवर. करेक्ट? Yes. दैट इज कॉल्ड बेसिन Yes. ऑफ द रिवर. गंगा बेसिन. गंगा बेसिन मतलब जो जो एरिया में गंगा नदी का पानी पहुंच रहा है, दैट इज क्या कॉल्ड गंगा बेसिन. ओके, गॉट इट? जिस इधर वो बाइक पास. So, for example, when a river is going through, the river might be giving water to 20 kilometer of one side and 20 kilometer of another side. Correct? ये समझ रहा है तुमको पॉइंट? Yes. देखो जब रिवर जाएगी कहीं से तो दोनों साइड में पानी देगी, राइट? Yes. और काफी डिस्टेंस तक देगी पानी, है ना, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है ना? तो जो जितने एरिया में उस नदी का पानी यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गंगा बेसिन. बेसिन बोलते हैं. ओके. तो जितना ज्यादा बेसिन होगा दैट मीन्स दैट रिवर इज गिविंग लाइफ टू मोर पीपल. यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. नाउ if you don't draw on the screen. Okay, now if you see the flow of the river. Okay, now this is Ganga flow. Ganga ka where is the source of Ganga? It is called Gangotri glacier. It is in Himalaya. Okay, so this is Himalaya. Okay, this is Ganga. This is Ganga flowing. The blue color that you are able to see. Yes. Thick line. Yes. Yeah. This is the Ganga, blue color. Okay. So Ganga is taking birth in Himalaya. Okay. Here it is taking birth. And it is from here it is moving in the eastward direction. Eastward. East side पे जा रही है ना. देखो दिस इज द ईस्ट ऑफ इंडिया. ये कोलकाता है. समझ रहे हो? Yes. कोलकाता Yes. कोलकाता कहाँ पे है इंडिया मैप पे? ईस्ट में है, राइट? Yes. Last class we had studied na where the cities are. So Kolkata is on the east of India. So Ganga is taking a birth in Himalayas here, north of India, and then it is moving to east of India. Yes or no?
Yes. Everybody understood? Yes. Yes. So it is taking birth in the Gangotri Glacier. Glacier is what? Ice. Top. Yes, ice on top of the mountain, right? Glacier. So Ganga is taking birth in where? It is called Gangotri Glacier. Why is it called Gomukh? Because the place from where the water is coming, okay, that place's shape is like a cow face. Okay. So why that is why it is called what? Gaumukh. Gau is what? Cow. Right? Gau Mata we say na? Gau. Mukh means face. So the Gangotri glacier looks like face of a cow from where from mouth the Ganga is coming. The shape is like that. Got it? बच्चों समझ में आ गया क्या? हाँ. तो उसको क्या बोलते हैं? गौमुख बोलते हैं. गंगोत्री ग्लेशियर इट इज द सोर्स ऑफ गंगा. वहां से गंगा गंगा माता चालू हो रही है, राइट? एंड देन व्हाट इज द फ्लो? फ्लो इज ईस्टवर्ड अक्रॉस द प्लेन्स टू बे ऑफ बंगाल. अभी देखो, ऑल द रिवर्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स व्हाट? Towards sea, right? You know the water cycle, right? The water of rivers flows towards sea. Yes or no? Yes. So Ganga, after taking birth in Gangotri, is moving towards east of India, which is the Kolkata side, West Bengal side, right? What is the route? See, यहाँ पे there is Prayagraj, which is called Allahabad previously, right? So Prayagraj, Varanasi, Patna, and then it goes to Bay of Bengal. This is the Bay of Bengal, right? यहाँ पे. Mouth of Ganges. So it is going to which sea? Ganga goes to which sea? Arabian Sea? Bay of Bengal. Bay of Bengal, right? Yes or no? Everybody understood? Now, what are the major cities on the way? Rishikesh, Varanasi, Patna, Kolkata. These are the major cities on the way of Ganga. Ganga. Which are the main states? Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. Is there a Ganga flowing in Maharashtra? No. No, right? It is starting to the north and going to the east. Correct. And what are the tributaries? What is the meaning of tributary? Tributaries are the small rivers that are starting from Ganga, right? Small rivers are there. So there is one big river, then there are small rivers. Sometimes these small rivers join the big river or they come out of big river. Okay? So Yamuna is a tributary of Ganga. Then Ghagra, Son, these are some of the tributaries. Don't need to remember all this, but understand the concept. Okay? Ganga is starting in north, moving towards the east of India, and then going to Bay of Bengal. Yes or no? So we got the flow of Ganga. Okay, now let's understand the flow of Yamuna. See, Yamuna also starts in Himalayas. Okay, Ganga starts in Himalayas. Okay, what is the name of the glacier? Gangotri Glacier. Okay, this will be Yamunotri Glacier. Yamunotri Glacier, right? This also starts in Himalayas. हिमालय में क्यों चालू हो रही है नदी? बताओ, कौन बताएगा? बोलो जल्दी. Why are the rivers starting in Himalayas? Because there is ice there, na? Whenever the ice is melting, it is forming a river. Yes or no? Yes. So a lot of rivers start in Himalayas, right? So Ganga and Yamuna both start in Himalayas. The glacier Yes. from where Yamuna starts is called Yamunotri Glacier. Okay? Mm. Mm. It is parallel to Ganga, joins at Prayagraj. Prayagraj is the place where Ganga and Yamuna are meeting each other. Yes. Okay? Yes. There is a Sangam there, right? What Yes. are the major cities? Yamuna. See, Abhi, we just discussed now this. From Delhi, which cities, from Delhi, which river is moving? Yamuna. We discussed this, right? I asked this question. Yes.
From Delhi, which river is going? Yamuna. Yamuna. From Taj Mahal, beside Taj Mahal, which river is there? Yamuna. Right? हाँ. Then, because the Taj Mahal is in Agra, we are so Agra mein which river is there? Yamuna. Right? Which river is there in Mathura? Yamuna. You remember that scene wherein Bhagwan Krishna was born in the jail and he was taken but to the another place from the jail. You remember that? Yes. Which Yes. river, which river is that? Yes. Yamuna. Yamuna. That is Yamuna Yamuna. river, right? Yes. Yamuna river. Yamuna. From that Yamuna river he is taken to the Yashoda Maya's home. Correct? He was Yes. taken Mm-hmm. from jail to Yashoda Maya home, right? Yes. So which river is there? Mathura. Sorry, which city is there? Mathura, but river is Yamuna. Okay. So we just looked at the length. It is around 1300 kilometers, 1376. You understood Yamuna, right? Yamuna is almost parallel to Ganga. Yamuna is also going to which sea? Bay of Bengal. Mo- Yamuna is meeting Ganga in which place? Bay of Bengal. Prayagraj. Okay. From there, Ganga goes to West Bengal. So Yamuna is still only Allahabad. Got it? इलाहाबाद मतलब जो प्रयागराज है ना वहां से फिर गंगा ही जाती है आगे. यमुना और गंगा का वहां पे मिलन हो गया. गॉट इट? बिकॉज यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट? देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. इसका मतलब Ganga. क्या है? Yes. यमुना एकदम सेपरेट ऐसी रिवर नहीं है. यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो डायरेक्ट यमुना डायरेक्टली सी को जाती है क्या? गंगा को नहीं. करेक्ट. तो वो यमुना गंगा से मिलन होता है प्रयागराज में, और फिर वहां से गंगा जाती है सी को, राइट? उसके बाद उसको गंगा ही बोलते हैं. Yes. ओके. नाउ द नेक्स्ट रिवर इज ब्रह्मपुत्र. Brahmaputra. ब्रह्मपुत्र. कहाँ से जा रही है देखो? देखो यहाँ पे ये इंडिया के बाहर है. आज का जो इंडिया ना उसके बाहर देखो, काठमांडू है यहाँ पे. यस. तो यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर है. ओके. यहाँ पे देखो गैंगटॉक है, राइट? सिलीगुड़ी है. हाँ. ये इंडिया के Yes. बाहर है. ये इंडिया के बाहर का सी रिवर है. तो ये देखो यहाँ से चालू हो रहा है ये, और ऐसे घूम के वापस इंडिया में आ रही है ये. मतलब इंडिया के बॉर्डर में है. देखो गुवाहाटी में आ रही है, फिर ऐसे नीचे जा रही है ना? देखो क्या बोल रहा है, सोर्स कहाँ पे है? एंग्सी ग्लेशियर, तिबेट. आज तिबेट किसके पास है? कौन सी कंट्री के पास है तिबेट? ये हमने पढ़ा था एक बार. तिबेट का कंट्रोल किसने लिया है अभी? चाइना. करेक्ट. तो जो ये ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है ना वो तिबेट में है. ओके. और देखो फ्लो कैसा है, ईस्ट में जा रही है. देखो तिबेट यहाँ पे है, वहां से ईस्ट में जा रही है, एंड देन यू टर्न मार के इंडिया में वापस आती है. ये देखो यू टर्न है यहाँ पे, है ना? देखो यहाँ से जाके फिर ऐसे वापस आ रही है, गुवाहाटी में वापस आ रही है. यू टर्न मारा है यहाँ पे सामने. ओके. ओके. बच्चों समझ गए? हाँ. और मेजर सिटीज कौन से देखो यहाँ पे, देखो गुवाहाटी. गुवाहाटी में कौन सा रिवर है? ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र. करेक्ट. ब्रह्मपुत्र. और फिर डिब्रूगढ़ है. डिब्रूगढ़ भी है इसके अलोंग द वे. तो ये दो मेन सिटीज हैं, राइट? और ये कौन से स्टेट में जाती है? अरुणाचल प्रदेश और आसाम. ये दो मेन स्टेट में ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है. तो इंडिया के बाहर जाके इंडिया में आने वाली कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र. 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 हाँ. और ब्रह्मपुत्र. इंडिया में चालू होती है क्या ये रिवर? नहीं. तिब्बत में नहीं. चालू होती है, राइट? तिब्बत नहीं. में चालू होती है, फिर ईस्ट साइड जाके फिर इंडिया में यू टर्न मार के वापस आती है ना? यस. गंगा और यमुना दोनों कहाँ पे जन्म होता है? इंडिया में होता है, राइट? हाँ. पर ब्रह्मपुत्र का वैसा नहीं है, है ना? नहीं है.
मार के इंडिया वो में। बाहर से यूटर्न लेके इंडिया में आती है। करेक्ट करेक्ट। और ये कौन से सी में जाती होगी? इसका पानी अल्टीमेटली कौन से सी में जाता होगा? बे ऑफ बंगाल, क्योंकि उधर ही है ना, देखो हाँ कोलकाता हाँ ये भी हाँ। उधर ही है, बे ऑफ बंगाल में ही जाएगा इसका पानी, है ना। हम्म हम्म। तीन अभी तीन देखो, रिवर्स। नेक्स्ट रिवर जो हमारी लास्ट रिवर है वो कौन सी है? नर्मदा। देखो नर्मदा। नर्मदा रिवर रिवर नर्मदा। एकदम अलग है, देखो। अभी हमने जो तीन रिवर देखी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, तीनों कहाँ पे हो रहा है उगम? हिमालय में, बराबर। हाँ हाँ। और तीनों कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल। यस। यस। लेकिन देखो नर्मदा कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक करके, वहां पे उसका उगम हो रहा है। और वहां से वो कहाँ जा रही है? वेस्ट में जा रही है, यस। गुजरात के थ्रू। एमपी गुजरात ऐसे करके कहाँ जा रही है? वेस्ट में। तो कौन से सी में जाती होगी ये? अरेबियन सी, राइट। तो नर्मदा नदी कहाँ जा रही है? अरेबियन सी में जा रही है ना। हाँ ओके। हाँ। देखो ये बाकी तीन से बहुत डिफरेंट नदी है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे एकदम प्लेन एरिया में ट्रैवल कर रही है। ये ऊपर की नदियाँ बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया में ट्रैवल करते हैं, है ना। बट ये एकदम clean। हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ सेंटर इंडिया, बराबर है ना। यस। अभी देखो यहाँ से अगर नदी जा रही है तो दोनों साइड में 100 100 200 200 किलोमीटर तक इसका पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ। पहुंचेगा ना। अंडर, देखो नदी से क्या होता है ना, पानी जमीन में जाता है, फिर जमीन से जाके फिर लोगों के कुएं में आता है, फिर लोगों के बोर में आता है, बराबर ना। यस। तो जब नदी हाँ फ्लो बराबर। करती है तो उसके आजू बाजू का एरिया में काफी वाटर आ जाता है, बराबर ना। उसको क्या बोलते हैं अपन? यस। रिवर बैंक, है ना। जहां जहां वो नदी का पानी आता है उसको रिवर बैंक बोलते हैं, राइट। अभी हम समराइज करते हैं ना। अभी क्वेश्चन क्या है? विच रिवर फ्लोज इनटू अरेबियन सी? नर्मदा। नर्मदा। विच रिवर नर्मदा। was which river नर्मदा। started in Tibet? टिबेट। ब्रह्मपुत्र। Brahmaputra, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। right. Which river started in Amarkantak? नर्मदा। नर्मदा। Narmada. Which river is called the center lifeline of Central India? नर्मदा। 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 Which river is the longest in length among the four ones that we have studied? गंगा। 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 नहीं ना, गंगा। गलत हो गया तुम्हारा। देखो ब्रह्मपुत्र का लेंथ देखो, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को देखो ना, वो ब्रह्मपुत्र। कहाँ से कहाँ हाँ। जाके यूटर्न मार के वापस आ रही है, बराबर है कि नहीं। ब्रह्मपुत्र। हाँ। तो सबसे लेंथ ज्यादा किसकी हो गई? ब्रह्मपुत्र की हो गई, है ना। ब्रह्मपुत्र। यस। ओके। तो ये चार रिवर्स हमने समझ ली। देखिए हमने क्या क्या समझा बच्चों? सबसे पहले रिवर को हमारी मदर क्यों बोलते हैं वो हमने पहले समझा, राइट। रिवर हमको क्या क्या देती है ना। फिर यस। हमने ये समझा कि दुनिया में जितनी भी बड़ी सिटीज है, दुनिया में बोल रहा हूँ हाँ, इंडिया में नहीं बोल रहा, दुनिया में जितनी भी बड़ी सिटीज है ना, वो सारी की सारी कोई ना कोई रिवर के बाजू में है। चाहे लंदन ले लो, चाहे पेरिस ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी बीजिंग ले लो, कोई भी बड़ी सिटी ले लो वर्ल्ड की, वो रिवर के बाजू में ही होती है। ओके, ये हमको समझ में आ गया। फिर रिवर के मैक्सिमम रिवर जो है ना वो हिमालय में स्टार्ट करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आइस पिघलता है, राइट। वेन एवर द आइस मेल्ट्स, द रिवर्स, द वाटर ऑफ द रिवर्स स्टार्ट। फिर हमने गंगा का देखा। गंगा कहाँ पे? गंगा गंगोत्री ग्लेशियर में चालू होके बे ऑफ बंगाल में एंड होती है, राइट। फिर यमुना, तुम्हारी यमुनोत्री ग्लेशियर, वो भी हिमालय में है। फिर वो बे ऑफ बंगाल में, वो बे ऑफ बंगाल में एंड होती है कि वो गंगा में मिलती है? गंगा को गंगा में मिलती है। जाती है करेक्ट गंगा के साथ। करेक्ट, वो दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ना। यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, right? उपनदी जिसको बोलते हैं हम, है ना। फिर ब्रह्मपुत्र का हमने देखा, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में चालू होती है, फिर ईस्ट जाती है, फिर यूटर्न मार के इंडिया में वापस आती है, फिर गुवाहाटी जाती है, फिर अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल के साइड में मिल जाती है ना। फिर नर्मदा, यस। नर्मदा हमारी अमरकंटक मध्य प्रदेश में चालू होती है, और फिर वहां से गुजरात के थ्रू अरेबियन सी में जाती है ना।
तो ये हमारे इंडिया के 4 मेन रिवर है बच्चों। ये 4 मेन रिवर हमने आज इसलिए स्टडी किए क्योंकि हमको ये समझना था कि इंडिया का सिविलाइजेशन कैसे ग्रो किया, इंडिया में सिटीज कैसे ग्रो की, राइट। गंगा के कारण ये वाला पार्ट ग्रो किया, फिर यमुना के कारण वही वाला पार्ट, उसी वाले पार्ट में ऑलमोस्ट पैरेलल जाती है। फिर यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रह्मपुत्र का पानी आ रहा है, गुवाहाटी वगैरह। फिर जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे नर्मदा है। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, बट हमने हमारे स्टडी के लिए टॉप 4 रिवर्स को लिया है, राइट। फिर हमने ये समझा कि बेसिन एरिया क्या होता है, राइट। जहाँ पे वो रिवर के वाटर के कारण फार्मिंग होता है उसको बेसिन एरिया बोलते हैं, राइट। फार्मिंग, बेसिन ड्रिंकिंग एरिया। वाटर, जो भी यूटिलाइजेशन होता है, जो भी, जैसे गंगा का बेसिन है, राइट। तो गंगा के बेसिन में हम्म। बहुत सारा फार्मिंग होता है, तो सबसे बड़ा बेसिन गंगा का है। हाँ। ओके, गंगा का मेन चीज क्या है ना बच्चों, देखो, गंगा का लेंथ कम है कि ओके, लेकिन बेसिन बहुत ज्यादा है। ये किसी ने नोटिस किया? यस। यस। इसका मतलब क्या है? um, देखो, बेसिन ज्यादा है, लेंथ कम है ब्रह्मपुत्र से। इसका मतलब क्या है, क्योंकि गंगा ना एकदम प्लेन्स में जाती है, तो वहां पे लोग बहुत रहते हैं, समझ रहे हो। दैट इज ऑल हैबिटेबल तो वो एरिया। ज्यादा ज्यादा हेल्प करती है लोगों को, पर ज्यादा वो हेल्प है करती है उसका लोगों जो। को, करेक्ट, इसलिए सबसे ज्यादा पर गंगा माँ फेमस है। क्योंकि इनका एरिया देखो कितना है, इतने लोगों को वो पाल रही हैं, इतने लोगों को खाना पीना सब दे रही हैं, इसलिए सबसे मेन रिवर, नेशनल रिवर कौन सी है इंडिया की? गंगा। 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 इसलिए गंगा का रिवर बेसिन सबसे ज्यादा है। इसका लेंथ भी ज्यादा है, ब्रह्मपुत्र के कंपैरिजन में सिर्फ कम है, बाकी नदी में ज्यादा है, लेकिन रिवर बेसिन बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में कोई नहीं है ना। ब्रह्मपुत्र तो यमुना से भी उसका बेसिन कम है। हाँ, क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्र जो है ना, ये पहाड़ों में ही घूम रही है, ये पूरे पहाड़ है इधर, यहाँ पे ज्यादा लोगों को वो फायदा नहीं होता। प्लेन्स में नहीं जाती। हाँ, करेक्ट, वो प्लेन्स में बहुत कम जाती है इसलिए। राइट। तो गंगा माँ को गंगा माँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि गंगा माँ का बेसिन बहुत ज्यादा है, बराबर। यस। यस और नो? यस। यस। ठीक है। तो बच्चों, अभी आज का सेशन, अभी हमारा टाइम फिनिश हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो आपको कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा? हाँ। यस। ठीक है। हाँ। तो देखो बच्चों, जो क्लास में तुम पढ़ते हो ना, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया करो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी मेमोरी में रह जाएगा वो, तुम्हारे को कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कस करो कि गंगा माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि गंगा माँ का बेसिन सबसे ज़्यादा है, गंगा माँ सबसे ज़्यादा लोगों को हेल्प करती है, राइट। तो इसलिए गंगा माँ को हम गंगा माँ बोलते हैं, सबसे बड़ी नदी, सबसे इंपॉर्टेंट नदी, इसलिए हम गंगा को बोलते हैं, हम्म। है ना। ये कॉन्सेप्ट हमको आज क्लियर हो गया, राइट। ठीक है। हम्म। ठीक है बच्चों, तो फिर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। we'll have the fourth session, which is going to be of India geography. I'll share the session topic on the group. Okay. ओके। Yes. Okay, thank you so much. बाय। Have a good weekend, enjoy. Bye. Okay. बाय। Bye. बाय सर। Bye बाय। bye. Bye. Bye bye. बाय। Bye bye.